Dear student, how are you? Today we are going to discuss one of the most important topic of inorganic chemistry, that is P block element. This will be our lecture number 2. We will discuss today about nitrogen. Okay, a lot to know, a lot to discuss. Before we begin, I want to say something. जिन लोगों ने इस लेक्चर सीरीज का पहले वाला वीडियो नहीं देखा, आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। उसके बाद पेन और पेपर लिख के बैठिए और ये वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। लोगों को लेक्चर का थंबनेल देख के पता चल गया होगा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट नाइट्रोजन। व्हाट इज द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन? Symbol of nitrogen is N2. Okay, and it was discovered by a scientist named Daniel Rutherford. Rutherford is very famous, and this Rutherford is not that Rutherford we have learned. Okay, ठीक है। तो हम सब लोगों को पता है इन आवर एटमोस्फियर अबाउट इट ऑकर्स 78%, ओके, बाय वॉल्यूम। हम लोगों का एटमोस्फियर में जितना गैस है, ओके, आउट ऑफ देम 78% इज ओनली नाइट्रोजन एंड रेस्ट ऑफ द अदर गैसेस। ओके, तो नाइट्रोजन मिलता कहाँ है? ठीक है, तो फर्स्ट ये तो हम लोगों का एटमोस्फेयर में मिलता है। एटमोस्फेयर का 78% ही नाइट्रोजन है। ओके, एंड इट नाइट्रोजन ऑल्सो ऑकर्स इन द कंबाइंड फॉर्म इन वेरियस कंपाउंड में इसको एज ए इंग्रेडिएंट मिला जाता है। तो क्या क्या कैसे कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन मिलता है? ओके, द फर्स्ट कंपाउंड इज KNO3 NaNO2। इसका एक बहुत फेमस नाम है जिसको बोलते हैं PCM। आप लोगों को PCM सुनने के बाद ही क्या याद आया? Physics, chemistry, biology, physics, chemistry, math. Okay, but here PCM means phase change material. याद रहेगा? PCM का मतलब क्या है? phase change material. Okay, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज में यूज किया जाता है। तो मेनली इसका यूज क्या है? इसको एज द थर्मल एनर्जी storage material in the solar thermal power plant। ठीक है, जो सोलर थर्मल पावर प्लांट है उसमें जो रॉ मटेरियल है, to store that we use this PCM जिसका नाम है phase change material। और यहाँ पे one of the most important composition is what? नाइट्रोजन। मोरओवर नाइट्रोजन को एमोनियम क्लोराइड में मतलब we can get here, एमोनियम सल्फेट में भी नाइट्रोजन मिलता है, एमोनियम सल्फेट। ओके, ये सब these are the very important कंपाउंड where we can get नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? ओके, वी नीड नाइट्रोजन फॉर वेरियस पर्पस। तो फ्रॉम वेयर वी विल गेट नाइट्रोजन? सो वी नीड टू प्रिपेयर नाइट्रोजन। तो हाउ नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड? तो नाउ वी विल लर्न द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखो, हम सब लोगों को पता है इन आवर एटमोस्फेयर 78% इज नाइट्रोजन। इफ वी कैन separate that nitrogen from the air, we can easily get nitrogen. Okay, so our first process will be from air. Okay, from
एयर। ओके, इसके लिए दो मेथड यूज किया जाता है। फर्स्ट, एक ही मेथड, इसे को बोलता है लिक्विफिकेशन एंड fractional distillation. I think all of you are familiar with this term, distillation. Okay, तो लिक्विफिकेशन मतलब क्या है? इसको लिक्विड बनाना है और उसके बाद उसको वहां से एज ए फ्रैक्शन वहां से डिस्टिल करना है। ठीक है, तो सी एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इज ओनली 772 केल्विन, बहुत ही कम है, केल्विन में है। कितना है? 77.2 केल्विन। 1 डिग्री सेंटीग्रेड में भी 273 होता है, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर में भी इसको हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? 90 केल्विन। देखो, इन आवर एटमोस्फेयर मेनली दिस टू गैस आर प्रेजेंट। ओके, अगर हम लोग ने एयर को क्या थोड़ा क्या करता है, लिक्विफिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, देन नाइट्रोजन विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड बिफोर ऑक्सीजन। ओके, बिफोर ऑक्सीजन, देन इफ वी सेपरेट दैट नाइट्रोजन, ओके, बिफोर converting oxygen into liquid, then we can get what? Then we can get nitrogen. So you can write, so liquid nitrogen distills out fast, leaving behind oxygen. ठीक है, माई हैंड राइटिंग इज नॉट सो गुड। ओके, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बिहाइंड prepared from air, we can also prepare nitrogen from ammonia and its compound. What is the formula of ammonia? Ammonia is NH3. देखो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है। इफ वी कैन रिमूव दिस हाइड्रोजन वी कैन इजीली गेट व्हाट? नाइट्रोजन। तो देखते हैं कैसे एमोनिया और इसका कंपाउंड से नाइट्रोजन प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट यू हैव रिमेंबर CuO, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के साथ हुए वी ट्रीट एमोनिया। ओके, इसको जब हम लोग क्या करते हैं, हीट करता है, ओके, इट रिलीजेस नाइट्रोजन गैस, कॉपर एंड वाटर। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, कोई भी थर्मल रिएक्शन में हमेशा वाटर रिमूव हो जाता है। व्हेन वाटर रिमूव हो गया, देन वी कैन इजीली गेट व्हाट? नाइट्रोजन। मोरओवर, you know, it is a very familiar compound, that is CaOCl2. What is this compound? This is what? Bleaching powder. ठीक है, bleaching powder. When we treat ammonia with bleaching powder, it forms calcium chloride and form water and releases nitrogen gas. So from this method we also can prepare what? Nitrogen. Moreover, when we pass chlorine gas through ammonia, okay, in that case a white fume is formed. What is that white fume? That white fume is HCl, and we get pure nitrogen. If we equate this equation, we have to put 6, 3 and 2. okay, I hope सबको बैलेंसिंग करना आ जाता है। ठीक है, moreover there is one of the most important process for the preparation of nitrogen. Okay, dinitrogen. Okay, that method is called thermal decomposition. What? Thermal decomposition. What do you mean by thermal decomposition? इसका मतलब क्या है? मतलब thermal मतलब heat, decomposition मतलब उसको तोड़ना है। ठीक है, in this method we mainly use ammonium nitrate. ठीक है,
इसको अगर हीट किया गया, इट शुड बी इन एक्वस फॉर्म, वी विल गेट नाइट्रोजन गैस एंड वाटर। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैसे याद रखना है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ट्राई टू रिमूव वाटर। देखो इससे कितना वाटर रिमूव कर सकता है, एक वाटर के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए, इसमें 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन है, तो वी कैन इजीली प्रिपेयर 2 वाटर एंड इसमें रह क्या गया नाइट्रोजन 1 1 2, तो ये डाइनाइट्रोजन हो गया है। ठीक है, तो मोर ओवर फ्रॉम एमोनियम डाइक्रोमेट, यू नो एमोनियम डाइक्रोमेट NH4 2 Cr2O7, okay, this is what, this is ammonium dichromate। ठीक है, फ्रॉम दिस इफ वी हीट देम, ठीक है, यहाँ से भी सेम उसी तरह नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा, वाटर रिमूव होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा वाटर रिमूव होना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे Cr2O3 फॉर्म होगा। ठीक है, तो दीज टू वेर थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन प्रिपेयर नाइट्रोजन। ठीक है, बट सी इन द एबव प्रोसेस व्हाट एवर वी हैव डिस्कस, सब में क्या है, सब में बाय प्रोडक्ट है, बहुत सारा क्या है बाय प्रोडक्ट है। अगर तुम्हें क्या चाहिए, प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, फॉर दैट केस you can use this method. What is this method? See, this is also a thermal decomposition method, but you can write very pure nitrogen can be obtained by the thermal decomposition of sodium or barium azide. What is azide? Remember, when there is a term azo always denotes nitrogen. अगर किसी पे भी chemistry related you got the term azo, azide, okay, azonium, then you have to sense what there is nitrogen. अगर उसमें थायो आ गया, थायो that means there is sulfur। ठीक है, तो देखो suppose this is what barium nitrate। ठीक है, barium nitrate, when we heat it up, okay, it will be decomposed and form नाइट्रोजन गैस। ठीक है, एंड रिलीज बेरियम मेटल। देखो ये तो मेटल होगा और ये गैस हम लोग ऊपर से रिलीज हो जाएगा, एंड इन दिस केस वी कैन गेट प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो दिस वीर ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जितना भी रिएक्शन मैंने लिखा, सभी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। So you have to practice them a lot. You have to write them in a copy and try to what? Try to learn. Okay, I am not telling you to do रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या करना है, you have to learn them, okay, by heart. ठीक है, now we'll try to discuss the various properties of nitrogen. नाइट्रोजन कैसा है, नाइट्रोजन का बिहेवियर कैसा है, नाइट्रोजन देखने में कैसा है, ओके, वो कैसे बिहेव करता है। जैसे कोई इंसान टॉल, फैट, थीन, ओके, मोटे पतला सब हो सकता है। उसी तरह नाइट्रोजन का कैसा कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, वी लर्न हियर। ओके, फर्स्ट वी विल ट्राई टू लर्न इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, इट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट रिमेंबर, नाइट्रोजन इट इज ए कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है, इसका कोई टेस्ट भी नहीं है, टेस्टलेस, एंड इसका कोई ऑर्डर भी नहीं है। ठीक है, ऑर्डरलेस गैस, इट इज ए गैस। ठीक है, कैसा गैस, ऐसा टाइप का गैस जिसका कोई कलर नहीं है, जिसका कोई टेस्ट नहीं है, एंड डोंट हैव ऑर्डर। ठीक है, one of the more important you have to remember, it has
a very low solubility in water. See, I have cross-checked in various books. In some book it is written nitrogen is highly soluble in water, but in your NCERT book it is written nitrogen is very low soluble in water. मतलब वाटर में नाइट्रोजन बहुत ही कम अमाउंट में क्या होता है, डिजॉल्व होता है. ओके, तो यू हैव टू एग्री विथ व्हाट NCERT. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इज 63.2 केल्विन. ठीक है, सबको पता है व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट. एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इज 77.2 केल्विन. ये मैंने पहले भी बताया होगा. ठीक है, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय चारकोल्स. ठीक है, सबको चारकोल पता है व्हाट इज चारकोल. चारकोल कैन इजीली एब्जॉर्ब नाइट्रोजन. ठीक है, एंड रिमेंबर नाइट्रोजन हैज ओनली 2 आइसोटॉप्स. हाउ मेनी आइसोटॉप? 2 आइसोटॉप्स. सबको पता होगा व्हाट इज आइसोटॉप्स. आइसोटॉप मतलब क्या है? They have what? I will not tell. You have to comment in my comment box. It has 2 isotopes, nitrogen 14 and nitrogen 15. ठीक है, तो these were all about the physical properties of nitrogen. Now we'll check their chemical property. ये केमिस्ट्री है, ऑब्वियसली इसमें हम लोगों को फिजिक्स से ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ना है. ठीक है, तो now we'll check the chemical properties of नाइट्रोजन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर डाइनाइट्रोजन मतलब N2. डाइनाइट्रोजन इज रेदर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर. ओके, ये रूम टेम्परेचर में नाइट्रोजन किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करता है. ओके, एंड दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम. व्हाई नाइट्रोजन बिहेव लाइक ए inert gas at room temperature? इसका आंसर you have to write in the comment box. Because इसका कारण क्या है, रीजन क्या है? Because of the high bond enthalpy of NN triple bond. 2 नाइट्रोजन के बीच में क्या रहता है? ट्रिपल बॉन्ड रहता है. एंड यू नो for dissociation, for cleavage of a triple bond, it takes a lot of heat. ठीक है, जो at room temperature मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको इजीली ब्रेक करना इतना आसान नहीं है. ओके, सो इट वी हैव लाइक ए inert gas at room temperature, but what when its reactivity increases rapidly with rise in temperature. ठीक है, when we increase the temperature इसका बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट हो जाएगा और इसका रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होते रहेगा. ठीक है, तो नाउ विल चेक वन बाय वन हाउ इट रिएक्ट्स विथ मेटल, हाउ इट रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक हाउ इट रिएक्ट विथ मेटल. देखो, पहले हम लोग देखेंगे एल्काली मेटल है, एल्कालाइन अर्थ मेटल. लिथियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो और एल्यूमिनियम ले लो. ठीक है, दीज आर व्हाट? दीज आर वेरी गुड मेटल एंड हाईली रिएक्टिव मेटल्स. ओके, तो इन लोगों के साथ जब नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा दे विल फॉर्म व्हाट? ionic nitride. I think all of you know what is ionic bonds. What is when ionic bond forms? When a metal and a non-metal react, generally they combine, they form ionic bond. ठीक है, अगर 2 नॉन मेटल के बीच में हुआ वो कैसा बॉन्ड हो जाएगा? दैट विल बी कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, मतलब इन दिस केस इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर इन आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर, और इन केस ऑफ electron will be not share. What will in ionic bond electron will donate or electron will accept, but in case of covalent bond
electron will be shared. Therefore covalent bond is what? They are thermally not so stable, मतलब उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इतना ज्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू द आयनिक बॉन्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक हाउ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ कैल्शियम. कैल्शियम इज ए गुड मेटल. ओके, सी व्हेन नाइट्रोजन विल रिएक्ट, देखो मैंने पहले बोला नाइट्रोजन इजीली रिएक्ट नहीं करता है, तो वी नीड टू प्रोवाइड व्हाट? हीट. व्हेन वी हीट इट अप, देन कैल्शियम एंड नाइट्रोजन विल कंबाइन टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्राइड. ठीक है, कैल्शियम का वैलेंसी कितना है? 2. नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है? 3. इजीली दिस इज व्हाट? कैल्शियम नाइट्राइड. यू कैन राइट द नेम. एंड व्हेन इट विल रिएक्ट विथ lithium, again we need to heat it up. It will also form lithium nitride. नाइट्रोजन का कितना है? 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है. यहाँ पे 3 और लिथियम का 1. ओके, एंड विल चेक फॉर मैग्नीशियम ऑल्सो. ठीक है, देखो मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का कितना है? 3. मैग्नीशियम क्या है? 2. तो दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड. If we valence this, we have to put 3 here, and if we valence this, we have to put 3 here. Okay, so this were about the reactivity of nitrogen with metal. We'll check the reactivity of nitrogen with non-metal. First of all, you have to remember which are non-metal. The elements that are present at the right hand side of the periodic table. That means maximum p block, they are in p block. Okay, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? हाइड्रोजन, ये सब नॉन मेटल है. व्हेन नाइट्रोजन कंबाइन विथ नॉन मेटल्स, ऑब्वियसली all the non metals, nitrogen itself is a non metal, so obviously it will be a bond. What type of bond? Covalent bond. So they will form covalent nitrides. ठीक है, मेटल के साथ क्या बनाया था? Ionic nitrates, but with non-metal they will form covalent nitride. So we will check one by one. We will mainly study about oxygen and hydrogen. तो देखते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है. ठीक है, तो इन ऑक्सीजन डाइनाइट्रोजन combines with oxygen only at very high temperature. You have to remember this. And what is the temperature? At about 2000 Kelvin. कितना है? 2000 Kelvin. ओके, बहुत ही ज्यादा है. To form nitric oxide. What will be the compound? It will be nitric oxide. तो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? NO. ठीक है, तो रिएक्शन विल बी सी. दिस इज नाइट्रोजन, this is oxygen, and remember this is a what type of reaction? You tell. What amount of heat? Suppose heat, what amount of 2000 Kelvin, it will form nitric oxide. Okay, generally to get this amount of heat we have to provide electric arc. What is that? Electric arc. अगर इलेक्ट्रिक आर्क के बीच से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रोवाइड किया गया तो देन यू विल गेट नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, और ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो प्रोडक्ट बना नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस नाइट्रिक ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HNO3. तो यू कैन राइट दिस रिएक्शन फॉर्म्स द basis for the manufacture of HNO3 by a method. The name of the method is, you have to remember the name, Birkeland and Hyde method. ठीक है, दो साइंटिस्ट, एक है ब्रिकलैंड और एक है आइट,
इन दोनों मिलके HNO3 बनाया था। एंड इन दिस प्रोसेस दिस इज द बेसिस। ओके, पहले NO को बनाना है, उसके बाद इसको रिएक्ट विथ वाटर, देन विल गेट व्हाट HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए और भी एक मेथड है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टवाल्ड मेथड। ऑस्टवाल्ड मेथड, ठीक है। इस लेक्चर सीरीज का लास्ट में आई थिंक वी विल डिस्कस अबाउट HNO3 by Ostwald method. That is very important for your exams point of view, whether it is board exam or your entrance exam. ठीक है। Now we will check how this nitrogen react with hydrogen, मतलब reaction with hydrogen. See, nitrogen is a gas and hydrogen also a gas, ठीक है। तो नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, हाइड्रोजन भी मतलब इतना इजीली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, तो इन दैट केस वी हैव टू प्रोवाइड ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इट इज कॉल्ड 773 Kelvin. Okay, and after combining these two they will form a very important inorganic compound, that is what ammonia. ठीक है, जिस एमोनिया का हम लोगों का लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड इन दिस रिएक्शन मैंने पहले बोला ये इजीली नहीं होगा, देयरफॉर वी हैव टू प्रोवाइड ए कैटलिस्ट, दैट इज कॉल्ड आयरन। ओके, वी हैव टू यूज आयरन एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। इसके अलावा इस रिएक्शन में मोलिब्डेनम भी यूज किया जाता है एज ए प्रोमोटर। व्हाट इज एज ए प्रोमोटर, एंड आयरन एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। एंड इन सम केस निकेल आल्सो यूज्ड हियर एज ए इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स, तो व्हाट इज कैटलिस्ट, व्हाट इज प्रोमोटर, व्हाट इज इनहिबिटर, we learn all about this in a chapter, it is called surface chemistry. Okay, I think many of you already know what is catalyst. Catalyst is a compound, okay, that increase or decrease or simply change the rate of the reaction. Okay, and promoter means it enhance the catalytic property of the catalyst. And inhibitor also called as catalytic poison, catalytic poisons, ठीक है। it destroy the catalytic property of the catalyst, ठीक है। तो सपोज ये बहुत ही ज़्यादा एमोनिया फॉर्म हो गया, इन दैट प्रोसेस वी नीड टू स्टॉप दिस रिएक्शन, देन यू हैव टू प्रोवाइड व्हाट दिस inhibitors. Okay, then it will stop these reactions. Okay, and these were all about a process that is called Haber process. Very important process that is called Haber process. In our next video we are going to discuss about ammonia. In that lecture I will explain detail about Haber process, ठीक है। तो आप लोगों को अभी याद रखना है what is Haber process. Haber process is a process by which ammonia is prepared. Okay, and what are the catalyst all about, you have to remember this, ठीक है। I'm going to tell you about one of the most important reaction of nitrogen, ठीक है। This is what calcium carbide, मैं फिर से लिखता हूँ CaC2. What is this? This is called calcium carbide, ठीक है। This is what calcium carbide. When nitrogen is treated with calcium carbide, यहाँ पे भी ये इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, तो वी हैव टू प्रोवाइड 1273 Kelvin heat, and in this method calcium cyanide will form and we will get coke. What is this? Carbon, ठीक है। See, when calcium carbide is treated with nitrogen they form a compound that is called calcium cyanide, ठीक है। have to remember this is very important reaction. Many time it has been asked in JEE, okay, and in NEET also, and your board exam it is directly asked. This will be given and will be asked what is the product, ठीक है।
एंड देयर इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस रिएक्शन, तो आप लोग एज ए नोट देख सकते हो क्या, सिंस ये जो कैल्शियम साइनाइड फॉर्म हुआ, व्हाट इज दिस, कैल्शियम साइनाइड गिव्स ammonia when reacts with water. Therefore कैल्शियम साइनाइड प्लस कार्बन, यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, व्हाट इज दैट प्रोडक्ट, कैल्शियम साइनाइड प्लस कार्बन। ओके, इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, नाइट्रोलियम, क्या बोलते हैं, नाइट्रोलियम, नाइट्रोलियम। ओके, मतलब व्हेन दिस कैल्शियम साइनाइड इज ट्रीटेड विथ वाटर, इसके वाटर के साथ कंबाइन हो जाने के बाद दे फॉर्म एमोनिया। ओके, देयरफॉर दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड नाइट्रोलियम। व्हाई नाइट्रोलियम, because it is used as fertilizer. In your entrance exam you will be directly asked which of the following is the formula of nitrolium. This combination is called nitrolium. Or sometime it will be asked which of the following is used as fertilizer. Then this should be your correct option. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी देखा, हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी देखा। एट द लास्ट we'll see some more about nitrogen. Now at the end of this video I am going to tell about some very important uses of nitrogen. तो first of all we'll see nitrogen कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। First of all you have to remember it is used for manufacture of very important compounds, suppose ammonia, HNO3, कैल्शियम साइनाइड, ठीक है, कैल्शियम साइनाइड etc. ठीक है, I have already told how ammonia is prepared by Haber process, it is by Ostwald process, and just sometime before I told you about calcium cyanide. ठीक है, it is used in fertilizer industry. Okay, and secondly you can remember to provide, देखो nitrogen is itself at room temperature behave like a inert gas. तो अगर किसी भी जगह में you have to provide a inert atmosphere, मतलब artificially एक inert atmosphere create करना है। Okay, in that case you can release nitrogen gas. Suppose बड़ा जो इंडस्ट्री होता है, suppose this is a steel और iron industry. Okay, in that case यहाँ पे बहुत ही मतलब very reactive chemical यूज किया जाता है। Okay, तो ये इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट करके मतलब इट कैन कॉज फैटल और हैजर्ड। ओके, तो टू stop this we need to create a inert atmosphere, and for that purpose you can write like this: to provide inert atmosphere, nitrogen gas is used in metallurgical processes. Okay, what is metallurgical process? Suppose especially in iron and steel industry. Okay, क्यों यहाँ पे नाइट्रोजन का काम क्या होता है? नाइट्रोजन इनर्ट डाइल्यूएंट फॉर रिएक्टिव केमिकल। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, why nitrogen is used in metallurgical process? Simple, inert, the function of nitrogen is inert diluent for the reactive chemicals. Okay,
now we'll see the third number use of nitrogen. सपोज तुम लोगों ने बल्ब देखा, ठीक है, जितना भी बल्ब CLF, LED और पहले वाला जो आता था सब बल्ब में उसका अंदर में एक गैस रहता है. यू नो व्हाट इज दैट गैस? दैट इज नाइट्रोजन गैस. तो सिंपली व्हाट कैन वी राइट? इट इज यूज्ड इन फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब. ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब्स. ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब में इसको यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर में क्या होना चाहिए? एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए. फॉर दैट लाइट कैन ग्लो इफिशिएंटली, और नाइट्रोजन की वजह से लाइट इजीली ग्लो हो जाता है, ठीक है. अगर उसमें दूसरा गैस दिया जाएगा तो लाइट विल नॉट कम आउट इजीली. ओके, now we'll check the fourth number use of nitrogen. Suppose liquid nitrogen, you know liquid nitrogen, as we have already learned how nitrogen can be liquefied. Liquid nitrogen is used as a refrigerant. Okay, refrigerant to preserve biological material और इन फूड इंडस्ट्री और फूड आइटम्स, ठीक है. देखो तुम सब लोग चिप्स, ओके, कुरकुरे सब खाता होंगे. ओके, इनसाइड दैट पैकेट देयर इज a gas. You know what is that gas? That is nothing but nitrogen, because nitrogen prevent them to oxidize. Okay, अलावा जितना भी बायोलॉजिकल मटेरियल्स है, लाइक सपोज इन ब्लड बैंक और एनीथिंग, एनी बायोलॉजिकल, ओके, फूड आइटम्स, ओके, टू प्रिजर्व देम वी नीड. अगर देखो, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन होगा तो इन दैट केस वायरस और बैक्टीरिया कैन इजीली ग्रो, फंगस कैन इजीली ग्रो, एल्गी कैन इजीली ग्रो. If there is a inert atmosphere, this type of organism will not be able to grow. Okay, in that case we need to provide a inert atmosphere. Okay, so for refrigerant we use, matlab to cool it down, we can use nitrogen. Okay, at last, this is the last use. There is many more use, but I am going to tell you this is the last use. See, the term that is called cryosurgery. It is used in cryosurgery. What is this? Cryo means cool. Okay, ठंडा है. और सर्जरी, you know सर्जरी, किसी का बॉडी में कटना है तो that is what? सर्जरी. इन क्रायोसर्जरी मतलब अगर ह्यूमन बॉडी का और किसी भी चीज का कुछ सेल और कुछ पार्ट अगर इन्फेक्टेड हो गया है, जहाँ पे we cannot use what? Surgical instrument. Okay, और in some case it is used in baby also. Okay, वहाँ पे देखो एक बेबी बहुत ही छोटा होता है, उसमें अगर तुम एक सर्जिकल ब्लेड यूज कर दिया तो मतलब इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, फॉर इन दैट केस नाइट्रोजन इज यूज्ड टू, मतलब जो सपोज दिस पार्ट इज इन्फेक्टेड, यहाँ पे अगर चारों तरफ से नाइट्रोजन मतलब दे दिया, मतलब नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा, मतलब कोल होगा. इसके ठंडे के वजह से ये सेल विल बी डेस्ट्रॉय, और इसके यहाँ पे जो जाम होगा दैट विल बी किल डाउन. ओके, तो फॉर दैट पर्पज इन क्रायोसर्जरी नाइट्रोजन इज यूज्ड. ओके, तो दिस वेयर ऑल अबाउट नाइट्रोजन. आई होप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट कीजिए, रिकमेंड कीजिए और फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए. ठीक है, कीप वॉचिंग वीडियो. थैंक यू.